इंजेक्शन लगाना डॉक्टर साहब। अरे हाँ रे, बिल्कुल धीरे से ही इंजेक्शन लगाऊंगा। बस एक बार ठीक हो जाऊं, उसके बाद बताता हूँ उस चिड़िया रानी को। वो मेरा मलाई वाला आइसक्रीम लेकर भाग गई, कमीनी चिड़िया रानी। चल अब चिल्लाना बंद कर। अरे दादा, इतना तेज लगा दिया। मैंने तो कहा था तुम्हें धीरे से लगाने के लिए। चलो अब तुम दोनों जाओ और तू कुछ देर में ठीक हो जाएगा। चल बाबू। वो देख चिंटुआ, वो रही कमीनी चिड़िया रानी। देखो कैसे मजे में मेरा मलाई वाला आइसक्रीम खा रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस चिड़िया रानी को पका के खा जाऊंगा। चिंटुआ कुछ उपाय बता उसे पकड़ने के लिए। चलो गुब्बारे से उड़कर उसे पकड़ते हैं। नहीं नहीं, वो गुब्बारे फोड़ देता है, कुछ और सोचो। तो चलो उड़ने वाला हेलमेट पहनकर उस चिड़िया को पकड़ते हैं। हाँ चलो। अब तू मुझसे बच के कहाँ जाएगी चिड़िया रानी? तूने मेरा मलाई वाला आइसक्रीम खाया है, अब मैं और चिंटुआ तुम्हें पका के खाएंगे। मैंने तो केवल एक ही आइसक्रीम लिया है और इसके लिए तू मुझे खाएगा? हाँ तुझे खाएंगे, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर तुम मुझे खा जाओगे तो? वो हम नहीं जानते, हम तो तुम्हें खाएंगे। मैंने कभी चिड़िया नहीं खाया। भागो! पकड़ चिंटुआ, वो भाग रहा है। तू हमसे बच के भाग नहीं पाएगा चिड़िया के बच्चे। मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा आइसक्रीम दे दे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं दूंगा, इसे मेरे बच्चे खाएंगे और मैं भी खाऊंगा। चिंटुआ तू इसको आगे से घेर, मैं पीछे हूँ। अब कहाँ बच के जाएगी तू? हमने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। चंपा, चमेली, मंगरुआ, जल्दी आ जाओ, मैं मुसीबत में हूँ। ये चंपा और चमेली कौन है? तू किसे बुला रहा है? वहाँ देखो, पता चल जाएगा। बाबू, ये चंपा, चमेली और मंगरुआ तो चिड़ियाओं का नाम है। मैं तो कुछ और समझ रहा था। क्या बात है, एक के साथ 3 फ्री? आज तो हमारी दावत होगी चिंटुआ। दोस्तों चलो इन्हें मजा चखाते हैं। तू हमें डरा रही है? हमला करो साथियों! अरे चिंटुआ मुझे बचा ले रे! ये सब चिड़िया मुझे बहुत जोर से काट रही है। मैं कैसे बचाऊं? ये चिड़िया मुझे भी तो काट रही है। हुई हुई हुई, भागो भागो! अरे छोड़ दे भाई रे! अरे छोड़ दे रे! हुई हुई हुई, भाग जा भाग जा! हुई हुई हुई! अरे तू कहाँ काट रही है? अरे मत काट ले रे! जान बचा के भाग बाबू! भागो, कहाँ तक भाग के जाओगे तुम दोनों? ये पूरा आसमान हमारा है। दोस्तों इन दोनों को छोड़ना मत, इन्हें इतना काटना है कि इनकी नानी याद आ जाए। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो चिड़िया रानी, अब हम तुम्हें नहीं पकाएंगे, लेकिन अब हम तुम्हें खाएंगे, वो भी नोच नोच के। लगता है अब हम ना बच पाएंगे चिंटुआ। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम्हारे आइसक्रीम के चक्कर में मैं भी फंस गया। साथियों चलो इन दोनों का उड़ने वाला हेलमेट निकालते हैं। नहीं नहीं, ये उड़ने वाला हेलमेट मत उतारना, नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे। हाँ हेलमेट मत निकालो, निकालो हेलमेट। बचाओ बचाओ! अबे तुम दोनों आसमान से कैसे गिरे? मत पूछो, बड़ी ही लंबी कहानी है। तुम बस हमारा इलाज करो, मेरे पिछवाड़े में भयंकर चोट आई है। रुको इंजेक्शन लगा देता हूँ। फिर से इंजेक्शन? मर गए मायरे।
In January 2025, a drilling team in East Antarctica finally hit bedrock after 4 years of cutting through ice. The core they extracted stretched nearly 2,800 meters, and inside it were perfectly preserved air bubbles, tiny pockets of atmosphere for more than 1.2 million years ago. Not estimates, not simulations, but directly dated using noble gas analysis. Actual breath from a world that existed long before humans. That single ice core quietly destroys one of the internet's most viral theories, and the reality it reveals is far more unsettling. You've probably seen the claim. Antarctica wasn't always frozen, ancient maps prove it, and a sudden catastrophe around 1816 flash froze an entire continent, burying a lost civilization beneath the ice while governments hide the truth. It spreads fast because it sounds just believable enough. But once you dig into the actual sources, the story falls apart, and what replaces it is stranger, darker, and far more human. The theory usually starts with old maps, especially the Piri race map from 1513. Created by an Ottoman admiral using multiple earlier charts, it shows a southern landmass some claim is Antarctica, but the map itself includes notes describing that land as hot, filled with ruins and large snakes, clearly not a frozen continent. Historians later confirmed it's a distorted version of South America, something common in early cartography. The second map often cited, created in 1531 by Orance Fine, looks even more convincing at first glance, showing a detailed southern continent, but it was labeled Terra Australis, a hypothetical landmass based on incomplete exploration, not a real survey. The idea that these maps prove an ice-free Antarctica came from a 1965 book by Charles Hapgood, who argued that an advanced ancient civilization had mapped the Earth. His work gained traction after a cautious foreword by Einstein, but the conclusions relied on heavy manipulation, rotating maps, shifting continents, and ignoring missing features. Despite that, the theory spread, repeated again and again without anyone checking the original evidence. At first, debunking this felt simple, almost too clean. But the real question isn't about maps, it's why Antarctica's history feels so incomplete, why such a massive continent seemed to appear so late in human records. That question leads somewhere unexpected. By the late 1700s, long before official discovery, the Southern Ocean had already become an industrial hunting ground. Ships from Europe and North America were chasing fur seals, driven by massive demand for pelts used in clothing. The process was brutal. New islands were found, seals were slaughtered in huge numbers, populations collapsed, and ships pushed further south in search of more. Within just a few decades, millions of seals were killed, entire populations wiped out so completely that early naturalists described them as erased. This relentless expansion is what led humans to Antarctica, not ancient knowledge or secret maps, but pure economic exploitation. Sealers didn't share information, they hid routes and discoveries to protect profits. So while an entire unofficial geography of the Antarctic existed, it never entered public records. By 1820, when Russia, Britain, and the United States all reported sightings of the continent within months, it wasn't a coincidence. It was the inevitable result of decades of hidden activity pushing further south. What looks like a mystery is actually the end point of an environmental collapse. The same pattern shows up again in Operation High Jump in 1946, often framed as a secret mission to uncover hidden bases. In reality, it was a Cold War power move, thousands of personnel, massive resources, and a poorly executed attempt to establish strategic presence in a new geopolitical frontier. Then came the Antarctic Treaty of 1959, often portrayed as a global agreement to hide the truth, but its origins were far more direct: territorial disputes,